ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये मॉक एग्जामिनेशन पेपर पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ। आफ्टर दैट जो भी आप लोग की क्वायरीज हैं, जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैटर कर लेंगे और उसके बाद वी जस्ट हैव फ्यू, अब कुछ ही टाइम बचा आपका, कल आप लोग का एग्जाम है। सो छोटी मोटी कुछ टिप्स है फॉर द एग्जामिनेशन, वो भी मैं आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंस्ट्रक्शंस आर सेम, कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड और बाकी इंस्ट्रक्शंस आप लोग के सारे सेम है। आई वोंट बी वेस्टिंग मच टाइम, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। अगर किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम होती है तो फील फ्री टू राइट इन द मैक चैट ऑप्शन। Starting with the first one, we need to convert this into binary values. So you people know the formula 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. Now what we need to do, we need to make 66. So 1 over here, and this is 64. 64 plus 2, this will become 66. The remaining bits will be set to 0. 85, again same sequence, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128. So we need to make 85. So 64 plus 16, that is 64 plus 16, that will be 80. ठीक है, 80 के अंदर now I need to add 5, so 4 plus 1, 5. Remaining bits are set to 0. And the last one, is 83. So same formula बच्चों, same technique we are going to use. So 64 plus 16, 80. 80 plus 2 plus 1, so that is equal to 83. Remaining bits are set to 0. Now moving forward बच्चों, अब ये बोल रहा है कि we need to convert these values into hexadecimal. So आप लोग को पता है hexadecimal में कन्वर्ट करने के लिए स्टार्टिंग विद द राइट हैंड साइड, बच्चे जर्नली मिस्टेक करते हैं, लेफ्ट साइड से 4 बिट्स का पेयर बनाते हैं। दैट्स रॉन्ग। हमेशा पेयरिंग करेंगे आप लोग कहां से, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। 4 बिट्स पेयर, अनदर 4 बिट्स पेयर। हर पेयर के नीचे क्या लिखेंगे, 1 2 4 8, 1 2 4 8। नाउ जस्ट एड दोज बिट्स जहां जहां 1 हो आपके पास। सो यहाँ पे सिर्फ 4 के ऊपर 1 है, सो दिस विल बी 4। और यहाँ पे हमारे पास वी हैव 8 प्लस 2 प्लस 1, सो दैट विल बी 10 11। 11 क्या होता है हमारे पास, 11 इज बी। सिमिलरली द नेक्स्ट वन, 4 bits, 1 to 4 8. So this is 4 and this is 5, so 4 5. And the last one will be, this is 9 and this is 5, so 5 9 5 9. ठीक है, so this was one of the question for the conversion. Moving forward, give 3 uses, other uses of hexadecimal notation used in computer science. So one of the use बच्चों, color codes in HTML. अब मैं बच्चों आप लोग का पेपर चेक कर रहा था, तो पेपर में बहुत सारे बच्चों ने आंसर क्या लिखे हुए, सिर्फ HTML लिखा हुआ। अगर आप लोग HTML लिखेंगे तो इस बात के ऊपर एग्जामिनर मार्क्स अवार्ड नहीं करेगा, याद रखिएगा ये बात, नंबर नहीं मिलेंगे। सिर्फ HTML लिखेंगे, HTML इज नथिंग, ठीक है ना। तो कलर कोड्स इन HTML आप लोगों को प्रॉपर वर्ड लिखना है। द नेक्स्ट वन विल बी मेमोरी डम्प्स, अनदर यूज। और एक और यूज बता दें आप लोग, मैक एड्रेस। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, असेंबली लैंग्वेज लिख देते हैं, तो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। असेंबली लैंग्वेज सिर्फ नहीं लिखना, आप लोग को क्या लिखना है, असेंबली लैंग्वेज नहीं लिखना, आप लोग को लिखना है प्रॉपर लिखना है कि वैल्यूज इन असेंबली लैंग्वेज आर डिफाइंड इन हेक्साडेसिमल नोटेशन। अच्छा जी, अब ये बोल रहा है बच्चों अगले पार्ट के अंदर, 2 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हेक्साडेसिमल नोटेशन। सो वन ऑफ द बेनिफिट इज
easier या easy to read and understand. Another benefit of using hexadecimal notation is easy to identify errors. अब कुछ बच्चे लिखते हैं कि साइज छोटा हो जाता है, so that is wrong. That is wrong. ठीक है, कुछ बच्चे लिख देते हैं कि सर साइज छोटा हो जाता है हेक्साडेसिमल नंबर यूज करने से, तो वो तो गलत बात है भाई, साइज सेम रहता है. अगर आप ए तो ए को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स ही चाहिए, तो एट द डे एंड बाइनरी के अंदर ही आपका डाटा स्टोर होता है. अच्छा जी, अभी मेरे पास कुछ सवाल आ रहे हैं यहाँ पे. सुहेब बेटा, आपके ऐसे क्वेश्चंस के मैं आखिर में आंसर करूंगा, ठीक है. सॉल्व पीडीएफ ऑफ कोर्स आई विल बी सेंडिंग ऑन द ग्रुप मूविंग फॉरवर्ड. अभी अच्छा जी, स्टोर रैम रोम में डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे डिसाइड करना है. स्टोर प्रोग्राम एंड ऐड एंड डाटा दैट आर करंटली इन यूज. सो करंटली इन यूज जो डाटा होता है दैट इज इन रैम. बूट अप इंस्ट्रक्शंस व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन. सो बच्चों बूट अप रोम में होता है. कंटेंट्स आर रिटेन व्हेन पावर. तो सॉरी, रोम के कंटेंट्स आर रिटेन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑन एंड ऑफ. इन द नेक्स्ट पार्ट ये बोल रहा है कि सर्किल द स्टोरेज कैटेगरी यूज्ड बोथ इन रैम एंड रोम. तो रैम एंड रोम आर प्राइमरी स्टोरेज. आगे बता रहे बच्चों अगले पार्ट के अंदर, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय ऑफलाइन स्टोरेज. तो ऑफलाइन स्टोरेज क्या होती है आपके पास? स्टोरेज devices that are portable and externally connected. एक नंबर यहां मिल गया, एक नंबर कुछ एग्जांपल्स दे दें. लाइक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, another mark CD, DVD, another example USB, another example SD card, XD card. So you can write. अच्छा, we have a question from Zen. हमदान ने तो यहाँ पे आंसर किया हुआ एज यूजुअल. ठीक है हमदान बेटा, अच्छा परफॉर्म करना है भाई कल. आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग स्पेशल फ्रॉम यू स्पेशली. ठीक है सर, इसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स ज़ैन, लिख दो पैराग्राफ के अंदर, कोई मसला नहीं है. आगे बढ़ते हैं. अच्छा जी, लॉजिक गेट, सिंपल सा एक गेट आ गया, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है. मैंने आप लोगों को सिंपल सी टेक्निक बताई हुई है, वो टेक्निक यूज करेंगे यहाँ पे. जितने भी सबसे पहला टेक्निक है, सारे नॉट गेट निकाल लो. सर नॉट गेट तो सिर्फ ए के साथ है, ठीक है. तो आप लोग क्या करो, अच्छा बस ये मैं जल्दी से पेपर सॉल्व करवा रहा हूं बच्चों, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा. फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा टिप्स दूंगा कि कल की पेपर की अभी जितना मीनवाइल थोड़ा सा टाइम बचे तो किस तरह क्या आपको मेंटली थोड़ा सा स्ट्रांग करूंगा, आप लोग को थोड़ा सा लेक्चर दूंगा, ठीक है. तो ताकि आप लोग मेंटली स्ट्रांग रहे, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से सॉल्व करते हैं. यहाँ पे एक ये आप लोग क्विक रिवीजन भी हो रहा है आप लोग का. ये हम लोग जो मॉक का एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, सबसे पहले नॉट निकाल लो भाई, ए नॉट. तो ए नॉट क्या होगा भाई? 1 1 1 1 0 0 0 0. अच्छा जी, अब आउटपुट्स को नंबरिंग कर दें आप लोग. 1 2 3. सबसे पहले 1 निकालने. 1 क्या हो रहे हैं? ए और बी जॉर हो रहे हैं. दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों क्या हो रहे हैं? जॉर हो रहे हैं. तो मैंने 1 कैलकुलेट कर लिया. दिस इज ए, दिस इज बी, जॉर हो रहे हैं. सो 0 0 1 1 1 1 0 0. नाउ ए और बी क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं 2 के अंदर. यू कैन सी ए नॉट एंड बी क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. यू कैन सी ओवर हियर. सो मैंने 2 भी कैलकुलेट कर लिया. दिस इज माय ए नॉट, दिस इज बी, एंड बोथ आर बीइंग एंड मल्टीप्लाई हो रहे हैं. 0 0 1 1 0 0 0 0. नाउ द लास्ट वन 3 2 एंड सी क्या हो रहे हैं? और हो रहे हैं. सो वी हैव 2, वी हैव सी, ये दोनों और हो रहे हैं. दैट इज इक्वल टू 3. So 0 1 1 1 0 1 0 1. Now 1 और 3 बच्चों क्या हो रहे हैं? एंड हो रहे हैं. एंड दैट इज इक्वल टू x.
So we have 1, we have 3, दोनों को जल्दी से एंड कर दो, 1 3 एंड कर दो, so 0 0 1 1 0 1 0 0, 4 marks. तो एक अच्छा सा सवाल था हमारे पास लॉजिक गेट का. मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन, लेट मी चेक, जल्दी से मैं चेक कर लूं. नहीं शाहम बेटा सही किया मैंने क्योंकि मैं अभी इतने मैंने पेपर चेक करे तो सही करा है. वो चेक कर लेना तुम बाद में, ये पेपर सॉफ्ट कॉपी मैंने व्हाट्सएप की हुई है, सो बाद में चेक कर लेना, ठीक है. वेरीफाई कर लेना. सही किया वैसे मैंने, वेरीफाई कर लेना अपने आंसर को. ओके जी. आइडेंटिफाई 3 सिक्योरिटी इश्यूज दैट आर पुट कंप्यूटर एट रिस्क. कंप्यूटर सिस्टम को रिस्क पे. सो वी हैव मल्टीपल इश्यूज. कुछ भी बता दें यहाँ पे. फार्मिंग, let's talk about viruses, वायरस या वायरसेस, हैकिंग. सिक्योरिटी थ्रेट है ना हैकिंग भी, बिल्कुल. सो वी हैव मैनी. कोई भी 3 यहाँ पे नाम लिख दें. योर कॉल. एक्सप्लेन हाउ फायरवॉल कैन प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम दीज सिक्योरिटी इश्यूज. सो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना है. फायरवॉल sits between system and internet. Monitors the incoming and outgoing traffic filter out IP addresses, protect the system from any malicious activity. So I think we are done with 4 marks के लिए. अच्छा लिखा है हम लोगों ने. बाकी आप इसको थोड़ा बहुत एलोबरेट कर सकते हैं अपनी अपनी वर्डिंग के अंदर. इन्हीं बातों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देगा. सर लॉजिक गेट पेंसिल से या सुफियान पेंसिल से कर लेना, जब टाइम मिले तो पेन आउट कर देना. नो वरीज इन दैट, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं होती. लेकिन पेंसिल का जो मॉडल है वो 2.5 HB लिखा हुआ होना चाहिए अपनी पेंसिल पे. जो ग्राफाइट का जो कलर है वो 2.5 होना चाहिए, वरना क्या होता है HB 2 है, 2.5 कर लो या 2 भी. हाँ 2 भी सही रहती है. 2 भी डार्क होता है, मतलब वो ग्राफाइट का कलर डार्क होना चाहिए आपका ना. हाँ बिल्कुल. फातिमा ने एक और पॉइंट बच्चों यहाँ पे ऐड किया हुआ है. वी कैन राइट दैट ट्रैफिक डजंट मीट द सर्टेन क्राइटेरिया देन वी ब्लॉक द एक्सेस एंड. ठीक है, वी कैन राइट. तो इन्हीं चीजों को आप फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़े भाई. यहाँ पे Karina is taking her computer science examination. She has 3 questions to be answered about output devices. For the first question, she writes the answer. It's a high powered laser that cuts material such as thin metals or wood. Output device बच्चों can be 2D या it can be a 3D cutter as well. So 2D cutter लिख दिया मैंने यहाँ पे बिकॉज मेटल और वुड को कट कर रहा है वो हाई पावर्ड लेजर लाइट के थ्रू. इट कैन बी a 3D cutter as well. 3 डायमेंशन के अंदर हमको कटिंग कर सकते हैं. स्क्रीन दैट इज मेड अप ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू पिक्सल्स. स्क्रीन uses layers of different types of liquid.
Identify the output device. So that is LCD, liquid crystal display, LCD. Moving forward, the last one, identify the output device. It is responsible for powering and moving a motor in machinery, such as a robot arm in a factory. So that is an actuator, बच्चों. So actuator क्या करता है आपके पास? वो ये सारे पार्ट मूविंग के लिए यूज किया जाता है. Now moving forward, कुछ blanks हैं यहाँ पे that we need to complete. And dash allows a user to write on a surface using a pen. So interactive whiteboard, of course, an interactive whiteboard. And interactive whiteboard allows user to write on this surface using a pen. The text and drawings can be captured and stored for later use. And dash printer produces hard copy of the document. A dash printer and using an inkjet, बच्चों, inkjet ink jet printer produces hard copy of the document using piezoelectric technology, and the two examples were thermal bubble. So thermal bubble, a dash printer uses a dash drum. So laser printer drum use करता है. Laser printer uses a drum, uses a rotating होगा, rotating we have, yes, rotating drum. So this was one of the question of input output devices. Moving forward, अच्छा जी, अब ये बोल high level languages programmers लिखते हैं XYZ, two types of translators that can be used for converting the high level languages. So we have compiler and we have interpreter. अच्छा जी, explain two reasons why a computer may choose a program to write in high level language rather than low level language. So दो रीजन बताने. अच्छा, यहाँ पे दोनों एडवांटेजेस होंगे. सो हाई लेवल लैंग्वेजेस, मैं प्रॉपर आंसर लिख देता हूं. हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू English language that's why easy to write and understand and even to learn as well. लर्निंग के लिए भी आपका बड़ी इजी होती है. सेकंड एडवांटेजेस, हाई लेवल बात मैंने यहाँ पे बता दिया ऑलरेडी. हाई लेवल लैंग्वेजेस, देखो समी ऐसा आंसर नहीं करना ह्यूमन फ्रेंडली, मतलब ये इसी के अंदर एड ऑन कर देना ह्यूमन फ्रेंडली, मतलब ये सिर्फ ह्यूमन फ्रेंडली लिख के नहीं छोड़ देना. दो नंबर का जवाब है, ठीक है. तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है चीजों को. इसकी भी एग्जाम्पल दो जरा, इधर भी एग्जाम्पल दे दो. लाइक एग्जाम्पल फॉर वाइल. अच्छा आंसर करो, स्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए. अच्छा जी, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर पोर्टेबल. इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट मशीन डिपेंडेंट. वो मशीन के ऊपर बच्चों डिपेंड नहीं कर रही होती. लाइक ये नहीं होगा कि अगर आप लोग पाइथन के अंदर कोडिंग कर रहे हैं तो एप्पल में अलग कोडिंग होगी पाइथन की और
डेल में अलग कोडिंग होगी, नहीं, सेम कोडिंग होगी, लेकिन लो लेवल लैंग्वेज अगर आप लोग कर रहे हैं तो एप्पल की लो लेवल लैंग्वेज अलग है, डेल की अलग है, सोनी की अलग है, वो प्रोसेसर बेस्ड कोडिंग होती है, ठीक है। सो हाई लेवल लैंग्वेजेस इंडिपेंडेंट होती हैं, पोर्टेबल होती हैं। मूविंग फॉरवर्ड, debugging is easier. Yes, we can write that as well. अच्छा जी, सो हाई, ये बाइनरी है बच्चों, मशीन कोड है, ये हाई लेवल है, और ये क्या है आपके पास, असेंबली लैंग्वेज है, 3 मार्क्स। ओके जी, प्रोग्राम दैट अलाउज अ यूजर टू व्यू वेब पेजेस। सो अ प्रोग्राम दैट अलाउज, तो ब्राउजर ही होगा बच्चों, एक प्रोग्राम होता है या आपके पास सॉफ्टवेयर होता है। द मेन प्रोटोकॉल दैट गवर्न्स द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा यूजिंग द इंटरनेट। तो इंटरनेट के लिए हम लोग HTTP यूज कर रहे होते हैं। वेबसाइट एड्रेस टाइप्ड, that is typed into an address bar, so that is URL, an address given to each device. It is provided by the network, so network address is IP address. A unique address, that is, it is provided by the manufacturer, so manufacturer provides MAC address. A company that provides, so that is an IP ISP, और ये आप लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, आप लोग को IP प्रोवाइड करता है थ्रू विच यू एक्सेस द इंटरनेट। मूविंग फॉरवर्ड, describe the purpose of interrupt in a computer system, 4 marks. So we can describe interrupts, पहले तो आप interrupt को ही define कर दो, are signals used to stop processing of instructions for a certain period of time with the help of interrupts processor is capable of performing मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग सिर्फ इसकी वजह से होती है, इंटरप्ट्स की वजह से। अ प्रोसेस a process having higher priority is executed first with the help of interrupts. If we do not have interrupts, computer system will keep on performing the same task until it's completed, resulting in crash of
मेमोरी क्रैश कर जाएगी, पाइल अप होते रहेंगे इंस्ट्रक्शंस, एट द डे एंड आपकी पूरी मेमोरी क्या कर जाएगी, क्रैश कर जाएगी। इंटरप्ट की एग्जांपल दे सकते हैं? यस दानियाल, यू कैन गिव एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्ट एज वेल ओवर हियर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, नाउ दो नंबर के सवाल हैं। बोला है सीरियल डाटा ट्रांसमिशन को एक्सप्लेन करो। कोई भी दो अच्छे से पॉइंट सीरियल ट्रांसमिशन के बारे में लिख दें। एक्सप्लेन आप लोग अपनी वर्डिंग में कर लेना भाई, मैं जल्दी जल्दी 2 पॉइंट लिख रहा हूं बस सिर्फ। सीरियल ट्रांसमिशन, 1 bit at a time through one channel used for long distance communication. Parallel transmission, multiple bits through multiple channels used for fast transmission of data. ठीक है भाई, ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन, सिर्फ ड्यूप्लेक्स का वर्ड है तो दिस मींस एग्जाम्पल इज टॉकिंग अबाउट फुल ड्यूप्लेक्स। ठीक है, ड्यूप्लेक्स टू-वे communication and both at same time. एक एग्जांपल यहां पे ड्रॉप कर दें, लाइक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन इज अ फुल डुप्लेक्स। ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब वो बोल रहे बच्चों आइडेंटिफाई 3 एरर डिटेक्शन टेक्निक्स that could see if an error has occurred. So कोई भी 3 टेक्निक्स के नाम आप लोग को यहाँ पे डिफाइन करने, डिस्क्रिप्शन मैंने आप लोग को लिखवाई दिया, यू कैन डिस्क्राइब फ्रॉम द नोट्स। वन कैन बी पैरिटी चेक, ठीक है भाई, नोट्स में देखना। अनदर वन कैन बी चेकसम एंड अनदर मेथड बच्चों कैन बी ARQs, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। काफी बड़ा पेपर बना दिया मैंने, या अल्लाह, चले जल्दी जल्दी करते हैं, हो जाएगा अभी, टेंशन नॉट। अच्छा जी, a system has pH sensor and a microprocessor to monitor pollution in a river. pH of the water should be between 6 to 8. System will output an alert if the pH is out of range. Explain the process. So I can explain the process pretty well. pH sensor will sense the value and send that value to analog to digital converter. That digital value is passed to microprocessor where it compares with a preset
preset value, you can also write pre-stored value. If the value is out of range, then an alert message is displayed until the value is again in range. This process is repeated again and again. A perfect reply to the examiner. मुसब ने यहाँ पे इतना बड़ा मुसब मैसेज बेटा आपने लिख दिया, जबरदस्त, बिल्कुल सही लिखा है बेटा, जबरदस्त आंसर लिखा है, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते भी जरा, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एक्सप्लेन सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स। तो भाई ये तीनों कीवर्ड ऐसे यूज करने के आपको एक्सप्लेन भी कर देना है। और data without encryption is called plain text. With the help of key, plain text is converted into ciphertext, that is encrypted text. At receiver side, this text can only be decrypted using the same key. ठीक है भाई, मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते। अनदर क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूजेस हाई इंटेंसिटी बीम ऑफ लाइट शोन थ्रू 3 layers of changing pixels. So that is, I think, DLP, digital light projector, uses millions of micro mirrors to reflect light through a lens. So माइक्रो मिरर्स जो है वो लाइट, अच्छा थोड़ा सा गलत हो गया मेरे ख्याल से, माइक्रो मिरर्स जो है ना वो आपके पास, माइक्रो मिरर्स जो है वो डीएलपी के अंदर यूज किए जाते हैं थ्रू लेंस, और एलसीडी प्रोजेक्टर्स के अंदर क्या होता है, हमारे पास हाई इंटेंसिटी बीम होती है ऑफ लाइट, ठीक है। अच्छा जी, यूजेस प्लास्टिक, रेजिन, powdered metal to generate physical output, so that is a 3D printer. Uses static electric charges, rotating drum, so that is a laser printer. Uses ink to generate a physical output, so that is inkjet. Uses high power lens to generate a physical output, so laser to generate a physical output, so that is
a 2D cutter. Sir, how do we explain asymmetric encryption with the method asymmetric encryption? फातिमा बेटा अभी छोड़ दें, because that is not part of your आपके डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और आज तक कभी भी 22 इयर्स के अंदर कभी भी नहीं आया, ओ लेवल्स के अंदर भी, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ए लेवल्स के अंदर है, वहां पे बात करेंगे. एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल. सो ये बच्चों में आप लोगों को पहले भी लिखवा चुका हूं, एक दफा वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं. अब्दुल्ला वापस से दिखा दूं, ये लो. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड भाई, टाइम कम है, जल्दी से बस मैं आगे बढ़ूंगा. रोल ऑफ इंटरप्ट्स इन फैच एग्जीक्यूट साइकिल. व्हेन at end of fetch execute cycle, we check for interrupts. If interrupt flag is on, then current instructions are stored in memory. Interrupt is loaded in program counter. Interrupt is executed using fetch execute cycle if no further interrupts, previous instructions are restored. ठीक है भाई. Now moving forward, double DDoS attack is more harmful. Explain why. Distributed Daniel या denial of service attack is from multiple systems and consumes more bandwidth of server. So that's why it is more harmful. Cracking is more harmful than hacking. Explain. Because in cracking, we have access to the source code. That's why we make changes in the source code of the program. So that's why it's more harmful. अच्छा जी, moving forward, TLS is same as SSL. Explain. Both are used for secure access of web pages over internet. और एक और बात बता दें, TLS is
updated version of SSL. MAC address is different from IP address. Explain. MAC address is provided by manufacturer and its physical address of a device, while IP address is provided by ISP या फिर network and its networking address of a device. ठीक है भाई, moving forward. आपको बताना है यहाँ पे एक प्रोसेस एथिकल है या अनएथिकल है, तो जल्दी से कर लेते हैं. गिव्स अवे passwords used in intruder detection software, so that is unethical. Software uses source code developed at the software house, that is unethical. Insists that the staff should work to deadlines, so that's fine. Turns down training opportunities offered by his training opportunities, unethical. Writes and sells software that reads confidential data, unethical. Fake test, unethical. Has the software application developed overseas? Yes, we can do that. 7 marks. Explain the working of a 2D scanner. बच्चों इस साल 2D scanner बड़ा इंपॉर्टेंट है. इसकी वर्किंग मैंने नोट्स में दी हुई है, इसको अच्छी तरह गो थ्रू कर लेगा एक दफा. जो मैंने अभी रिवीजन गाइड अपलोड किया वहां पे देख लेगा अच्छी तरह. सो नहीं, एज सच कोई डिफरेंस नहीं है साथ में बेटा, दोनों का सही मतलब है. नाउ हमें यहाँ पे बच्चों कंप्लीट करनी है अपनी साइकिल. सो कंट्रोल यूनिट के साथ जो यूनिट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, बाय डायरेक्शनल होता है, तो दैट इज ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. देन कंट्रोल यूनिट के साथ जो अनदर चीज कनेक्ट होती है, दैट इज द क्लॉक. सो सिस्टम क्लॉक गिवन होगी हमारे पास यहाँ पे, सिस्टम क्लॉक. देन मूविंग टू बसेस. एग्जामिनर ने बता दिया डी जो है वो डाटा बस है, ये डाटा बस है. तो हमारे पास कंट्रोल बस का ऑप्शन है. सो यू कैन सी ये यूनी डायरेक्शनल है और ये बाय डायरेक्शनल है. सो ई क्या होगी? कंट्रोल बस. एंड एफ क्या होगा? इट विल बी, सिंस देखो यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जा रही है अभी यहां से, तो दिस विल बी एड्रेस बस. छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को पिक करने होते हैं. अच्छा जी, क्लॉक स्पीड इज अ फैक्टर दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ पीसी. एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट. क्लॉक speed determines the time required to complete one fetch execute cycle. Higher the clock speed, faster the execution. ठीक है भाई, डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है. ए क्या है? अच्छा ए, सॉरी ए क्या होगा? ए क्या होगा? दो ऑप्शन बचे हमारे पास, कंट्रोल बस हो गया, एड्रेस बस हो गया, ALU हो गया, सिस्टम क्लॉक हो गया. नाउ वी हैव टू ऑप्शंस, ईदर सेकेंडरी स्टोरेज या जनरल पर्पस रजिस्टर. तो रिमेंबर वन थिंग, सेकेंडरी स्टोरेज इज नॉट पार्ट ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल. सो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास ए होगा. ठीक है. अच्छा जी, IP स्टैंड्स फॉर, आई थिंक एवरीवन नोज, इंटरनेट प्रोटोकॉल. नाउ इनवैलिड का आपको रीजन देना है. अगर कोई IP एड्रेस इनवैलिड है,
The first IP address, this is invalid. Reason क्या होगा? Octets are out of range. मतलब मैक्सिमम हेक्साडेसिमल के अंदर रेंज क्या है? 00 से लेके FF तक, और डायनरी की रेंज क्या है? 0 से लेके 255 तक. So now this is a valid one. Valid का रीजन नहीं देना. 4 octets you can see 1 2 3 4 separated by a dot, and सारे octets क्या है? रेंज के अंदर है, तो वैलिड है. Now this is also invalid. Reason 257 is out of range. Maximum number can be 255. Now the last one, this is also invalid. The reason is J is invalid character. ठीक है भाई, 4 marks. Explain the difference between public and private IPs. So I can explain that. Private IPs are more secure. और एक और डिफरेंस बताना है आप लोगों ने. Public IPs are used to access internet, while private IPs are used for networks. ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क्स यूज करने के लिए यूज की जाती है. एंड आई थिंक बच्चों वी आर डन विद द पेपर. सो दिस वाज वन ऑफ द मॉक एग्जामिनेशन दैट आई कंडक्टेड. मुझे बड़े अच्छे क्वेश्चन लगे. ये वाले थोड़े से वियर्ड क्वेश्चन थे, लेकिन आप लोग को कल के पेपर के लिए भी इस टाइप के मुश्किल क्वेश्चंस की भी तैयारी करके रखनी है. सर क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों बायो का जो पेपर 2 है बड़ा ही वियर्ड और बड़ा मुश्किल आया ओ लेवल बायो का. तो यू शुड बी मेंटली स्ट्रांग. आप लोग को भी थोड़ा सा स्ट्रांग होना होगा कि मे बी पॉसिबल. अब देखिए, अगर मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आया, थोड़ा सा बात कर लेते कल के एग्जाम के ऊपर, तो आप लोग वो पेपर कर सकते हैं. सर क्यों कर सकते हैं? बिकॉज आप लोगों ने बच्चों बहुत डिटेल में हर चीज बहुत डेप्थ में पढ़ी हुई है. हर चीज हम लोगों ने बहुत डिटेल में डेप्थ में हर चीज बहुत हमने अच्छी तरह कवर की हुई है. और जो क्वेश्चंस आज तक कभी पेपर्स में नहीं आए, एंड देयर आर चांसेस कि वो अब आ सकते हैं, कोई नया टाइप का क्वेश्चन दे दे, तो वो सारे सिनेरियोज भी मैंने आप लोगों को फास्ट ट्रैक के अंदर और हर जगह कवर अप करवाए में. सो कल देखिए, एक बात याद रखिएगा, पेपर से 2 बच्चे डरते हैं. कल एग्जाम है आप लोगों का, सुबह बस अब रेस्ट करना स्टार्ट कर देगा आफ्टर रिवाइजिंग द रिवीजन गाइड. पेपर से 2 बच्चे डरते हैं. सर कौन से 2 बच्चे? एक वो बच्चा डरता है जिसकी कोई तैयारी ना हो. एक वो बच्चा डरता है पेपर से, उसको घबराहट होती है, टेंशन होती है, जिसकी तैयारी ना हो, जो जीरो, जिसको पता है मैं फेल हो जाऊंगा कल जाऊंगा, तो वो बच्चा डरता है पेपर से. दूसरा वो बच्चा डरता है जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो. जिसकी बहुत अच्छी तैयारी हो वो बच्चा भी क्या होता है? डरता है पेपर से. क्यों? क्योंकि उसको ये डर होता है कि कहीं कोई चीज ना छूट जाए, कहीं कोई चीज ना छूट जाए, कोई एक ऐसा वर्ड ना निकल जाए मेरी तैयारी में से, मेरे रिवीजन में से, कि वो एग्जाम में आ जाए कल के. तो ये 2 बच्चे पेपर से डरते हैं बच्चों. ठीक है, जो 20 वाले होते हैं वो तो जो जिनको डर नहीं लग रहा वो समझे फिर यार उनकी ना बहुत अच्छी तैयारी है ना बहुत खराब तैयारी है, जिन बच्चों को डर नहीं लग रहा. अच्छा, अब करें क्या? तो बच्चों नाउ पढ़ना था आप लोगों ने पूरा 11 साल पढ़ लिया. अब कल एग्जाम डे. व्हाट आई वुड रिकमेंड, बी रिलैक्स. अब बिल्कुल रिलैक्स कर जाएं. पास पेपर्स सारा स्टफ जितनी तैयारी करनी थी आप लोगों ने कर ली, उसको साइड में करें. रिवीजन गाइड को अपने मोबाइल फोन में या अपने टैबलेट में या अपने सिस्टम में ओपन कर लें और उसकी रीडिंग करना स्टार्ट करें. रिवीजन गाइड को रीड करते रहें. आई थिंक अभी आपके पास 4-5 आवर्स हैं. आप लोग ये रात को थोड़ा सा लेट नाइट ही सोते हैं, तो रिवीजन गाइड 51 पेजेस हैं, उसको 4-5 दफा रीड आउट कर लें. जितना ज्यादा रीडिंग करेंगे रिवीजन गाइड को उतना अच्छा है. सर रिवीजन गाइड में ऐसा क्या है? कल के एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चंस आने सब रिवीजन गाइड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह अवेलेबल होंगे. और आप लोग को जो वर्डिंग है ना, वो रिवीजन गाइड वाली ही यूज करनी है. क्यों?
क्योंकि बच्चों स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छा होना चाहिए। रिवीजन गाइड के अंदर मैंने आप लोग की बुक की प्योर वर्डिंग यूज की है और कुछ मेरी अपनी वर्डिंग भी ऑफ कोर्स, लेकिन कुछ मार्किंग स्कीम की भी वर्डिंग मैंने डाली है। तो ओवरऑल इट्स अ बैलेंस्ड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर्स। ऑल्दो पेपर में आप लोग को अपने हिसाब से भी कुछ बातें अगर लिखनी हो तो यू कैन राइट, लेकिन अब मेंटली यू शुड बी वेरी स्ट्रांग। अब ये मेंटली स्ट्रांग होना बच्चों, बस आराम से अब रिवीजन गाइड को रीड आउट करो और कल का पेपर जाके अटेम्प्ट करो और जल्दी सो जाएगा प्लीज। अगर आप लोग का माइंड फ्रेश नहीं होगा तो फिर चीजें इतनी अच्छी डिलीवर आप लोग नहीं कर पाएंगे। तैयारी करनी थी, हो गई तैयारी, 11 साल से आप लोग तैयारी करते हुए आ रहे थे, अब इट्स टाइम टू डिलीवर। तो जब डिलीवरी देने जा रहे हैं तो मेंटली, फिजिकली, हर चीज आप लोग प्रॉपर, आप लोग उधर 1 आवर 45 मिनट्स के लिए अवेलेबल होने चाहिए। पेपर अभी बता रहा हूं बहुत आसान आएगा। जिन बच्चों का पेपर जल्दी हो जाए, निकलने की नहीं करेगा, अपने आंसर्स को रिवाइज करेगा, अपने स्ट्रक्चर्स को बेहतर करेगा, ठीक है। ओवर राइटिंग मत करेगा, एक चीज को काट के फिर उसके ऊपर लिख रहे हैं, ये चीज भी अवॉइड करेगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक। मैं अभी भी अवेलेबल हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, आप लोग की जो क्वारीज है, जो क्वेश्चंस हैं, फील फ्री टू आस्क। कोई भी अगर छोटा मोटा डाउट है लास्ट मोमेंट के ऊपर अगर आप लोग पूछना चाहें तो यू कैन, आप लोग व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, एंड इंशाल्लाह पेपर 2 के लिए फिर बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।